Okay, so earlier it was known that the electricity and magnetism are both are separate phenomena. But in 1820, Christian Hans Ørsted stated that electricity and magnetism both are not a separate phenomena, but both are interrelated to each other and interdependent. How is it? Let's know. See, this is the sprinkled iron fillings. This is the sprinkled iron fillings around a conductor rod. For example, rod. So ये क्या है कि अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. There is no current flowing through this wire, so it is in the random direction. But when there is a current flowing through a conductor, then you will see that all these sprinkled iron fillings will come into a concentric circle. What do you mean by concentric? Means same radius, different radius, same center. Center same होगा, different radius होगा. अगर ये ऐसे करंट पास कर रहा है तो आयरन फिलिंग्स ये कुल ऐसे जो है वो स्प्रिंकल्ड आयरन फिलिंग्स जो है कुल इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे. ठीक है. सो हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड इन 1820 stated that if we reverse the direction of the current, then the deflection of the needle will also reverse. अगर मान लीजिए करंट अभी ऐसे जा रहा है और डिफ्लेक्शन नीडल जो है वो इस तरफ शो कर रहा है, तो जैसे ही रिवर्स करेंगे डायरेक्शन तो डिफ्लेक्शन वो इस तरफ शो करने लगेगा. This was the first point. And when we take this needle closer to the wire conductor, then the deflection will increase, and deflection will also increase when you will increase the flow of current. करंट का फ्लो इंक्रीज होगा, मीन्स वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज होगा, तो भी डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा. सेकेंड, रिवर्स करोगे डायरेक्शन करंट का तो डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा. और एक पॉइंट क्या था, व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर आप मान लीजिए कि ये तो बता ही दिया कि रिवर्स करोगे करंट तो रिवर्स होगा, जब क्लोजर लाएंगे नीडल को तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करेगा. और एक नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट. Okay, so Hans Christian Ørsted in 1820 stated that कि उन्होंने बताया कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ करंट और मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. लिसन केयरफुली. Current or moving charges produces magnetic field. It was being discovered by Hans Christian Ørsted in 1820, and when he was giving a lecture, and then at that time he noticed that current flowing through a circuit, there is the compass and that was showing the deflection, and then later it was being experimented. So magnetism and electricity is not a separate phenomena. Both are interrelated and interdependent. That was being stated by Hans Christian Ørsted. Thank you.